to frame. My lord has to interpret. They have framed the law. They have framed. They have to interpret the constitutional provision. They had to frame it at 238, 239. They had to bring in constitutional. बास काकड़ की citation दिखाए 2012. ALD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the para 50? For declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो. Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve our own difficulties we are having in understanding things. My lord, thank you very much for giving patience. Nani, thank you very much. Who will next? Amicus को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप आ जाइए, उस्मान साहब आ जाइए. और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब. सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड. He is senior. We'll ask him first. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया. जी सर. जी. I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए. इधर माइक. हाँ. While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Mohammed Kashif, that is, my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake decree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored. Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब, जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं. हम इंडिविजुअल केसेस 5-year बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन. तो हम आपके इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों, वो फिर अलग सुनेंगे जी. तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं. मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ. एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. F था ही नहीं ओरिजिनल में. कर रहे हैं ना support 18th amendment से पहले. They could do so amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that was brought by a dictator in it. But then there were subsequent parliaments. And ये बात सही है आपकी, ये बात सही है. और फिर वो my lord जो आया है 62 में amendment किया है 2010 में, उसमें contrary कोर्ट किया. ये बात आपकी सही है बिल्कुल. दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ. समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको
जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं। आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी, उसके पेपर रिजेक्ट किए हैं ना जी उन्होंने। लाइफ टाइम? जी नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो नहीं, तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? नहीं, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ। तो आई एम कंफ्यूज्ड, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट, मैंने सर अर्ज कर दिया, जो अल्लादीनू केस है और जो केस है उसका सरदार। आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये है जी। चलिए, और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, होनी चाहिए। एक बात आपसे पूछ रहे, ये जो आप कहते हैं डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं। माय लॉर्ड, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? माय लॉर्ड, पार्टली अडॉप्ट कर रहा हूं लेकिन मुकम्मल नहीं जी। मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे में। जी मालूम, नंबर बताएं केस का। मेरा नंबर है जी 984 और 2018 मालूम। आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट है, अपेलेंट? एपिलांट हूं माय लॉर्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले चलिए, अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत, ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का, विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये राय नहीं फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला मालूम सबसेक्शन क्लॉज 1 में पढ़ूंगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन a high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए। इस जगह ना उस्मान साहब, ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर। नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के नाम से अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी। ऑन एप्लीकेशन of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold the office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की जुरिस्डिक्शन है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This is the original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of co-warranto can be issued by the High Court. जी मालूम, This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम, इसको देख ले, मान लेते हैं ये बात है
तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट का हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस, मतलब यही मैं कर रहा हूँ। अगर उसके बाद लाजमी नहीं, इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज में भी समझे, आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा माय लॉर्ड। ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do, or to do anything he is required by law to do, without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये order नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration inbuilt है इसमें। और इसी तरह देखिएगा माय लॉर्ड बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में, जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है, वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा माय लॉर्ड आप, इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के वाले वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल डिटेंशन। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, व्हेन देयर इज नो रेमेडी। मानो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलाजा फरमाइएगा। बी ये जो सी है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने पे फेल हुए हैं। पॉइंट ये है माय लॉर्ड, आप हमें से पढ़वा रहे हैं, पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर, मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिसडिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरी हम्बल सबमिशन ये है, ठीक है, दे सकता है। चले आगे बताएं, आगे बताएं। अगली बात जनाब देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है माय लॉर्ड। एक सवाल माय लॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा माय लॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिसक्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू, मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा वादे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े जी माय लॉर्ड। उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना, जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वही वादे तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिसडिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जो है वो बेसिकली जुरिसडिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड। और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord। Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिकेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अ मेन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते
आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f यही कह रहा है मालूम, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, अमीन ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जॉन, तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ आज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वही फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब ये ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज has also authored the judgment in Faisal Wavda case. उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो can you reconcile the two judgments? Yes or no? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूँ कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावदा के can you reconcile them or not? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो
यू आर बीइंग वेरी फेयर, आगे बढ़िए। अब योर ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 फैसल बावड़ा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी, अलादीनो भाइयों केस मालूम। ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना योर ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच करेक्ट लॉ। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है इसमें? दुबानी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाई किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसमर साहब मंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के बाद इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samiullah Baloch is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मालूम मैं तो मुकम्मल कर दी मालूम। यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोना मुलाजा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiullah Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord. So to that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। आप काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। सॉरी दोबारा कहिए। 2021 SCMR 988 टाइटल 988। मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूम। इसका टाइटल मैं मालूम सॉरी मालूम। जी टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम, सॉरी। हम आपको बता देते हैं। सॉरी, केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी। जी मालूम। अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मैलाफेडे नहीं थी। The same author. No, my lord, that is the judgment. Mazhar. लेकिन one of the member was the same. जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मैलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी। अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some। My lord, and last judgment on this point, But the learned author
is also member of the bench, my lord. though this judgment is by Syed Mazhar Ali Akbar Naqvi. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023. PLD 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए. ये जरा दे दें 23. ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है, तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा? उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड, पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए, पेज 82. ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही है माय लॉर्ड जजमेंट. ये 82 के पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है. हमारे यहाँ 72 ये फरवरी के पार्ट में है. फरवरी पार्ट भी दे दें इसका पार्ट. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी जी, मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं. मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है माय लॉर्ड. जी, पेज 82 माय लॉर्ड. पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर. एक सेकंड आने दें. माय लॉर्ड. Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, my lord. Page 82. Paragraph 4. My lord. जी. May I read, my lord? जी. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate. The questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा माय लॉर्ड. 63 वाली बात है. अगर 63 की बात हो रही है, 62 नहीं, इसमें फाइनल में 62 आ गया माय लॉर्ड. डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? माय लॉर्ड, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी. सॉरी, इसमें माय लॉर्ड ये इसी के आखिर में है माय लॉर्ड. सॉरी, मैं गलती से कह गया था. ये इसी की जो है ना, इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में पेज मैं माय लॉर्ड. अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड. माय लॉर्ड, थर्ड पार्ट में तो मैंडेटरी हुआ रहा है. डिसेंटिंग ओपिनियन है, इसी में है माय लॉर्ड. ये इसी में कब में है? सभी में होगा. 146 पेज माय लॉर्ड. 117 पेज 146. मैं आई रीड माय लॉर्ड. 146. Era? Para 117 माय लॉर्ड. The last para of जी माय लॉर्ड. majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4.
the question stand asked accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल बलोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर, एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइड किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? ये तो आपका जो पहला मौकिफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट में। ऐसे नहीं है, ये काइंडली देखिएगा, 1C हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका रियल इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल बलोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 69 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़ेगा। 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड। 168 मालो, पैराग्राफ 10 मालो, 10 and 11 both 11। दोनों पहले 10 पढ़े बेटा। There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents. Whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices, lucrative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest and ameen. There being no declaration to the contrary by a court of law, the said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is in cases of so and so has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to further protect the fundamental right of the citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. ये मालूम अगले बुक में चला गया मालूम अगली किताब में आएगा जी मालूम
मैं पढ़ देता हूँ. By a competent court of law after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord? Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याह्या साहब ने पूछ लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 में लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर. सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम. पढ़ने जी 62 का सब clause 2 है, the disqualification specified in D and E. So that is not only the qualification but also the disqualification. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim, but such a person shall have good moral reputation. So मकसद दोनों का एक है, एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है. हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है. But I tend to agree with you कि मकसद दोनों का एक मकसद है. क्योंकि देखिए अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है. अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली. था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा. तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन. What I wanted to say earlier was, उसको आपने एड्रेस नहीं किया. देखें 62(1)(f) में declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है, वो भी किसी एक्ट के तहत है. सो दैट actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samullah Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So for 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से
कि इसने अपनी डिग्री नहीं दूसरी डिक्लेरेशन है, देखिए ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है, दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट एंड देन वी आर बिल्डिंग ऑन दैट इवेंट कि इसकी वजह से, क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की, इसलिए ये अमीन नहीं है। ठीक, सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज कम है, एफिडेविट में ये चीज कम है, आपकी एसेट्स में ये चीजें नहीं है, इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है, और वो डिक्लेरेशन आप देखिए ना, कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहा है कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है 60 कई जजमेंट्स ऐसी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। तो अब आप दूसरों का खत्म हो गए, तो दूसरों काफी लोग हैं और 2 मिनट लूंगा। 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं, 63(1)(p) में, लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है, उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3(1)(p) में आएगी। तो क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं, तो फिर तो आपका आर्गुमेंट। अभी हमारे पास सिर्फ सवाल ये कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी? मैं तो ये समझता हूं आइन में अमेंडमेंट नहीं, तो वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती, या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है, तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी, तो फिर क्यों? सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए, चलिए समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखे, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि somebody is disqualified for such a period? This declaration ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे 2 व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम। डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? मतलब वही मैं अर्ज करता हूँ माय लॉर्ड, 2 व्यूज हैं। नॉमिनेशन पेपर गलत फाइल किया, ठीक है, ही गेट्स ट्रैप्ड अंडर 62(1)(f). अब मुद्दत
पार्लियामान की 3 साल भी हो सकती है। बाई इलेक्शन भी हो सकता है। एक सेकंड है जी, बाई इलेक्शन हो सकता है, 3 साल भी हो सकती है। या कोई आदमी मर जाए, उसने कहा चलो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो उसकी सीट पे आ गया 1 साल बाद, तो वो आपका कहना ये कि ये 5 साल भी ज्यादा है। बिल्कुल, एक इलेक्शन, एक नॉमिनेशन पेपर, वो चाहे किसी और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा, किसी और सीट पे जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दे, अगले दिन जमा करवा दे। अगर वो फिर किसी ने चैलेंज आप ना इस तरफ से चैलेंज हुआ है ना उस तरफ से भी चैलेंज हुआ है, वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये कि इस वजह से भी 332(2) जो है वो अल्ट्रा वायरस है। नहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो इट्स ओनली फॉर वन टाइम नॉमिनेशन पेपर, इसलिए 5 साल भी नहीं लगाया जा सकता उस पे कदम। आप कहते हैं 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर टू नॉमिनेशन पेपर फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इख्तियार सिर्फ पेपर रिजेक्शन के हद तक है, नथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, लास्ट वेरी गुड एंड नॉवल पॉइंट यू टेक। लास्ट माय सबमिशन माय लॉर्ड, चंद जजमेंट्स में अर्ज करूंगा जो कि समीउल्लाह बलोच के इफेक्ट को मजीद खत्म करती है माय लॉर्ड। पहली है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 137। पहले साइट तो नहीं हुआ है? नहीं माय लॉर्ड, आई डोंट थिंक सो माय लॉर्ड जी। 137 इसमें क्या हुआ? 137। What's happened in this? इसमें माय लॉर्ड ये कहा गया कि डेक्लेरेशन बाय कोर्ट होनी चाहिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। ये तो अभी ये दीजिए, लेकिन ये साइट नहीं हुई जजमेंट। नहीं ये नहीं साइट हुई है। ये कितने मेंबर बेंच है? सेकंड माय लॉर्ड, ये 1 2 3 नहीं, इसमें भी उम्र सब 137 137 सरदार यार मोहम्मद रिंद जी माय लॉर्ड, ये तो इधर ही पड़ी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये माय लॉर्ड 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। but the same learned author जी माय लॉर्ड। देन माय लॉर्ड एक का फैसला आता है, लाइफ टाइम बैन है। जी ये है लाइफ टाइम, लेकिन इस बात पे कि डेक्लेरेशन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। अब अगली जजमेंट देखिएगा 2019। एक सेकंड। Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samiullah Baloch. ये तो उसको फॉलो कर। पैरा 4 है माय लॉर्ड, पैरा 4 है 141 पेज पे माय लॉर्ड। हाँ वो पढ़ें फिर। The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019. बताइए 2019 SCMR 1939, my lord. Page 1939, my lord. 1943 and 1948 पे my lord इसका 194 पे my lord relevant citation my lord 1939 नहीं रेलिवेंट आप बता रहे थे my lord एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा पैरा नंबर 7 my lord. May I read my lord para 7? We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. आप कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? Para number 7 है my lord. 1943 Sorry my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7 my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature.
No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so-and-so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है, my lord. That is at page number 1945. ये पैराग्राफ 10 पढ़ लें. I think ये इशू हमारे पास आ गए. कॉपी है भी मगर मेरे पास. ये पढ़ें. I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of subarticle 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave to of this court be granted to consider and address the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge, the three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात. तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें. ये अब कब की बात है? 2019 की बात. 2019 की बात है. अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल. ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9 में समीला को फिर डिस्कस किया. जी मालूम. Be that as it may, in Samuel Bloch, we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. Different voices, different judges are saying, like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. well, मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, प्रिसाइजली बता देता हूँ, टाइम क्योंकि बहुत हो बता दें. मालूम एक है मालूम 2019 SCMR 1684 जी. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी that he is not a sagacious, he is not a mean. Name क्या है of your parties? ये है निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान. निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान. Even without recording evidence. जी 1695 है मालूम इसका रेलेवेंट पेज. 1695 पैरा नंबर 7 मालूम. ठीक है, नेक्स्ट बताइए. मालूम इसके बाद है मालूम 2019 SCMR 137 मालूम. ये सारे मामला 2019 में हुए. 2019 SCMR पेज है मालूम 137. इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालूम. पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालूम. 137 रेलेवेंट है पेज 139 पेज 141 मालूम जी. इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में.
ठीक है मालूम। इसके बाद है मालूम इसमें क्या हुआ था? ओवरऑन तो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट, उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इन कोवरेंट वाज अपहेल्ड मालूम। नो मालूम, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732, दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालूम, पेज 732। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालूम। कितने जजेस? 732, सॉरी मालूम, नो मालूम, ये नहीं, वो है मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732। ये वो नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है, फिर अपनी जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर, ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालूम, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 736 एंड 737 पेज पे मालूम। नहीं, ये हबीब अकरम नहीं, मालूम, ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह। जी सॉरी, ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब, और ये 3 मेंबर बेंच है। जी मालूम, वो जो हबीब अकरम केस है मालूम, दैट ये एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है, और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालूम। 732 पे थे आप। सॉरी 737, 36 एंड 37, ये पैरा नंबर 14 है मालूम। इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BP Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali, and whose date of birth according to her NIC and Nadra record. ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालूम। इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन अथॉरिटी का, उसको अपहोल्ड किया गया मालूम। नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है, ये लिखा है 62(1)(f) में ही किया है इसको, बट पीरियड नहीं लिखा है। पीरियड नहीं लिखा, लेकिन 62(1)(f) तो ये लाइफ टाइम नहीं है। अब उस वक्त तो लाइफ टाइम था मालूम। जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल, इसमें सिर्फ 62(1)(f) लिखा, इसमें लिखा है डिस्क्वालिफाइड। जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मालूम, इसमें क्योंकि 62(1)(f) पे रिलाई किया गया, उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया, और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 मालूम, 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 मालूम। इसमें मालूम ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपहोल्ड हुआ। इसका 589 पेज मालूम रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी। जी मालूम, पैरा नंबर 19 है मालूम। जी, इसमें क्या हुआ था मालूम? इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया, और ECP की ये अपील, वो ऑर्डर अपील मंजूर होकर उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया गया। परमानेंटली? जी मालूम। इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस, पेज 589 मालूम, पैरा नंबर 19। Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ठीक मालूम, ये मैंने एक पेपर बुक तैयार की है मालूम। आखिरी मेरी सबमिशन सिर्फ ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है, उसके बारे में कि कौन सा जजमेंट किन हालात में रिविजिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उस पे मैंने एक पेपर बुक तैयार की है जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मालूम, देख लीजिएगा। वैसे अगर कहें तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है।
ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट माय लॉर्ड। ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे। इलेक्शन कमीशन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया। न ट्राइब्यूनल या आरओ नहीं था माय लॉर्ड। रिलेवेंट पोर्शन बता दें। इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक करके बता देता हूँ। इसमें पेजेस सिर्फ बता मैं पेजेस बता देता हूँ मतलब, मैंने ये नोट किए हुए हैं अपने पास। लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें। मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर्मा ले, बाकी बाद में पेज 3 बता। ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए जजमेंट। ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल, पेजेस बता दें। पेज नंबर 3 मालूम इस पेपर बुक। पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ठीक है। पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन। ये पढ़िए नहीं, बस ठीक बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। 9 देन 48 माय लॉर्ड, 48 देन 56 माय लॉर्ड। आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना? जी जी, बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने अर्ज किया। 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी माय लॉर्ड, ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका। देन 18। So these are all the grounds to revisit and overrule जी, it. मेरी हमत सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज होते हैं। ये जजमेंट ऐसी है समयूला बलोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड मौजूद हैं, और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए खत्म हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीजों को आपने कंसीडर। आपका कहना ये कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं हुई? मेरा कहना यह है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है। प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट इंक्योरियम है? सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ उसका स्टेट डिसाइसिस का की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है। सारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई, अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी नहीं जनाब की दवाई नहीं। वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल। आई एम ग्रेटफुल। You argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने आर्गू किया। चले okay, we appreciate you are very precise and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break and so Aji Bhandari sir, we will come back. If I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. We'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, probably they've reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone. Just representing myself. So and you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है। अब ये सब भी मौजूद है जी। So we'll hear. आगे तो ऐसा करते हैं, we will hear you last. जी मैं आखिर में आऊँगा, but we resume at 2 or 2:15. नहीं at least 2:15.
it may be even longer. Mikey can be heard first. Ji, we'll hear Mr. Bandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी appeals में जो 63(h) के जी conviction अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो disqualify होता है जब तक वो 5 साल का time lapse नहीं होता. तो जो impugned judgment है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको redundant कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि even if What do you want? why not I am saying कि वो judgment को set aside कर दिया जाए. आप बेशक facts पे I know you have taken 63(1)(h) में आप चाहते क्या हैं कि 5 साल disqualification हो क्या हो? Lord, वो तो लिखा हुआ है उसमें मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए उस प्रोविजन को क्योंकि जो लाइफ हुई है. But we'll hear you. आपकी लाइफ हुई है? सर लाइफ नहीं हुई. No, but Saki will hear you. I mean, the batting order we've just explained. Batting order. ठीक है. Thank you.